Today we will discuss about electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करने से पहले थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जो चार्ज प्रोड्यूस करता है उसके हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड produced by a charge can be represented in two ways. One, in terms of intensity, in which we measure force acting on a unit positive charge at a point. And the second one is electric potential, in which we calculate work. Electric field intensity is a vector quantity, while potential is a scalar quantity. Electric field intensity basically measures force and electric potential measures energy or work. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द electric field produced by a source charge is called electric potential at that point due to this source charge or this particular charge. मतलब इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक कैरी करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक कैरी करने में जो वर्क डन होता है वो उस पॉइंट पर पोटेंशियल होता है. V इक्वल टू W बाई Q नॉट. वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट is W divided by Q naught, means we consider here unit positive charge and therefore Q0 equal to 1 or W divided by Q0. It's SI unit. Work done joule per coulomb, joule per coulomb or volt. दोनों सिमिलर यूनिट्स हैं. पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलॉम और वोल्ट. वन एक ही जैसी यूनिट है तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम. इन दोनों यूनिट्स में कोई चेंज नहीं. 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम. One volt. If 1 joule of work is done by the external agency in carrying a unit positive test charge of 1 coulomb from infinity to a point in the field, then potential at that point will be 1 volt. ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी. और डायमेंशन लिखो तो B equal to W work M L square T minus 2. Charge Q equal to IT, current into time, I ampere, T time. ये हो जाएगा B equal to M L square A minus 1 T minus 3. डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वायर A minus 1 T minus 3. वर्क डन Q0 को पॉइंट B तक कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा वर्क डन in bringing charge Q0 at B. If Q0 equal to 1, then it will be potential at B. If we carry this charge Q0 to point A, then it will be work done in carrying charge Q0 from infinity to point A. If Q0 is 1, then
it will be potential at A. Here we are going to discuss potential difference. VA minus V. If we remind our definition, then we find that it is simply potential difference between 2 points is simply the difference of work done between these 2 points or between the 2 points in which potential difference is to be measured. मतलब इन्फिनिटी से जो हम चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक और इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ये जो वर्क डन आ रहा है, ये बेसिकली अगर हम इसको समझना चाहें तो कह सकते हैं कि Q0 से पॉइंट बी तक ये जो भी वर्क डन है ये तो कॉमन है। तो डिफरेंस इन वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज up to A minus work done in bringing the test charge up to B. VA minus VB equal to W by Q naught. Again, potential difference is also measured in volt. Let us consider we want to calculate electric potential due to point charge. In order to calculate potential due to point charge, this is source charge Q, and by virtue of this source charge, we want to evaluate potential at P, that is at a distance small r from plus B. Let this point is infinity. To find the potential, we have to calculate work done from infinity to carrying a charge Q0. Let B started carrying charge Q0 and reaches at point A, which is at a distance x from O. Q0 को हम कैरी करते करते पॉइंट A पर आ गए, और ये पॉइंट A और O के बीच की पॉइंट O और A के बीच की सेपरेशन ये x है. Then Q0 is positive and the source charge is positive. Then source charge will repel the charge Q0 and will exert, let it is exerting a force F as shown in diagram and outward, because force is repulsive nature. Now force between Q and Q0 at A may be given as F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by x square. सेपरेशन ये O और पॉइंट A के बीच की सेपरेशन x है, तो 1 by 4 pi epsilon naught Q0 by x square. If we calculate, if we displaces this charge Q0 from A to B through a small distance dx against this force of repulsion imposed by the source charge, to displace the charge Q0 from A to B against this force, we have to done extra work by the external agency, and this small amount of work is given by dW, that it is dW equal to F force, but force minus dx, force minus dx, displacement is opposite. Now dW equal to minus F dx. In order to find the total work done, W equal to integration of dW. Total work done. In order to find the
total work done in bringing the charge q0 from infinity to point P equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught q0 by x square dx. Total work done means we are carrying the charge from infinity to point P, that is from infinity to R. Now W equal to minus q naught 4 pi epsilon naught integration 1 by x square dx. इसके लिए जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा वो x पावर माइनस 2 dx माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, ये फार्मूला हो जाएगा। c यहाँ आना नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, मीन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो हम लिमिट पुट करेंगे, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा w इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इंफिनिटी टू r। और सॉल्व करते हैं तो माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस 1 को बाहर ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस बना देगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये x टू द पावर माइनस 1 ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू r। लिमिट इवेल्युएट करते हैं तो ये आएगा w इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई अपर लिमिट 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी। w इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Equation 2. This is the total work done in bringing the charge q0 from infinity to point P. But we want to evaluate the work done in bringing unit positive charge. That is, we want to find the potential at P, and therefore P equal to W by Q naught. It will give Q naught by 4 pi epsilon naught R divided by Q naught cancel, V equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. This is the expression for potential due to point charge. If we draw a graph between potential and R, will be this type. If we draw a graph for between electric field and potential, then this is the graph showing the variation between potential and distance. If we draw a graph between electric field and potential, it will be as electric field as this one is electric field E R square, and this one is B proportional 1 by R. These are the graphs. So variation between electric field or potential with respect to distance. If we use a negative charge in place of positive charge in carrying it from infinity, then potential
will be equal to v equal to minus 1 by 4 pi epsilon नॉट Q by R। अगर हम माइनस चार्ज यूज करते हैं इन्फिनिटी से कैरी करने के लिए, तो ये जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव साइन के साथ Q by R बोल्ट हो जाएगा। अगर सब SI यूनिट्स में होंगे तो इसी निगेटिव चार्ज को अवॉइड, निगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करते हैं। Potential due to group of charges. If a point is at distances r1, r2, r3 and r4 from the point charges q1, q2 minus q3 and q4 respectively, then the resultant potential at that point will be given as B equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 by r1. It will be B1, B2, 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2, B3 equal to 1 by 4 pi epsilon naught minus Q3 by R3, and similarly B4 equal to 1 by 4 pi epsilon naught minus Q4 by R4. Now total potential due to these four charges or due to this group of charges will be B equal to B1 plus B2 B3 plus B4. Now V equal to 1 by 4 pi epsilon naught common Q1 by R1 Q2 by R2 plus minus Q3 by R3 plus minus Q4 by R4. Now B equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 plus Q2 by R2 minus Q3 by R3 minus Q4 by R4. If there are n point charges, then their potentials will be represented by B equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation I varies from 1 to n Qi by Ri. Where R1 is the distance between Q1 and point R2, Q2 and point R3, Q3 and point, and so on. If the charge distribution be continuous, then this summation will be changed into integration. अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो समेशन है वही सिंबल चेंज हो जाएगा किसके लिए, इंटीग्रेशन में। तो जो पोटेंशियल होगा वो आ जाएगा B इक्वल टू B equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation integration of dq by r। वहाँ वो स्मॉल चार्ज एलिमेंट का कंसीडर करेंगे और फिर इससे इवेल्युएट करेंगे। इफ चार्ज इज स्प्रेड कंटिन्यूअसली ओवर एन एरिया A, then B equal to, if charge is spread continuously over an area A, then it will be 1 by 4 pi epsilon naught integration for complete area dq equal to sigma dA by R. If charge is distributed continuously within a volume, then the same
integral will be written as 1 by 4 pi epsilon naught integration for whole volume rho dV by R. Now